Good morning students, how are you? I hope you are feeling well at your places. Stay safe, safe lives. Hello, I am Vinesh from Shri Jyoti Educational Group Kota. Today we are discuss about chapter 6 lines and angles of mathematics class 9th. Linear pair of angles, if the two angles, angle A and angle B, these two angles are stand on a line, then the sum of these two angles is called linear pair of angles, and the sum of linear pair of angle is 180 degree. Then a pair of adjacent angles formed by intersecting lines, linear pair of angles are supplementary. Vertically opposite angles, if the two lines are intersecting to each other, then the angle subtend on the opposite faces of the intersecting line is called vertically opposite angles. ये दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनके अपोजिट फेस पे जो एंगल बन रहे हैं, these are angle A and angle B. Then these vertically opposite angles are equal, and the pair of vertically opposite angle is angle A equal to angle B, and also the pair of these angles are equal. Parallel lines and transversal lines is very important part of lines and angles. Now see here, transversal line. A transversal or a line that intersect two or more coplanar lines each at a different point is a very useful line in a geometry. Transversal tell us great deal about angles. Transversal line, a line which is intersect two or more lines at the 6 points is called transversal line. These are two parallel lines. ये दो parallel lines है. इनको ये line intersect कर रही है at this point, this at this. तो जो intersecting points में जो angles बन रहे हैं, this is a relation between the parallel lines and transversal lines. Parallel line remain the same distance apart over their entire length. No matter how far you extend them, they will never meet. Parallel lines, they never meet to each other. Now the angles are formed in the parallel line is 1, 3, 4, 8, 2, 6, 7, 5. Now the relation between these angles are the transversal intersect the two parallel lines formed corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, interior angle on the same side of the transversal. Yes, corresponding angles. If the two lines are parallel to each other, then the transversal line makes an angle on the same side of the parallel lines. यदि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो तो इनकी सेम साइड पे बने हुए एंगल कौन कौन से हैं? एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर का रिलेशन देखा जाएगा. एक्सटीरियर इज एंगल 1 एंड इंटीरियर इज 5. Exterior is 7 and interior is 3. Then corresponding angle pairs are 1 and 5, 3 and 7. Angle 1 equal to angle 5, angle 3 equal to angle 7. Angle 2 is exterior, 6 is interior on the same side. This is corresponding angles. Angle 2 barabar angle 6, angle 4 barabar angle 8. The angles that occupy the same relative position, I already explained. सेम साइड पर सेम रिलेटिव पोजीशन पे जो एंगल्स बन रहे हैं, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं. रिलेटिव पोजीशन एट ईच इंटरसेक्शन वेयर अ स्ट्रेट लाइन क्रॉसेस टू अदर्स. इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर्स होते हैं सेम साइड पे, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, इज ऑल्सो इक्वल. नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. बेसिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनता है वो जेड शेप पे बनता है. जेड शेप पे जो आपका एंगल बन रहा है, दिस इज जेड शेप, एंड जेड के फेस पे जो इंटीरियर पार्ट पे जो एंगल बन रहे हैं वो 5 और 6 है और 7 और 8 है. दिस एंगल्स आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. देन एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 and angle 7 equals to angle 8. Next is alternate exterior angle. अभी
ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जेड शेप पे बनते हैं, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी जेड पे बन रहा है, दिस इज द शेप ऑफ जेड, बट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सटीरियर। इस जेड के फेसेस पे जो बाहर की तरफ एंगल बन रहे हैं, एंगल ए बन रहा है एंड एंगल एच बन रहा है, द रिलेशन ऑफ एंगल ए एंड एंगल एच इज कॉल्ड alternate exterior angle. When two parallel lines are cut by a transversal, the two pairs of angles on opposite side पे बने हुए angles से of the transversal के opposite है and outside the parallel lines, and the angles in each pair are congruent. जो pairs of each pair है वो congruent होते हैं. Interior angle on the same side of the transversal, these lines are suppose parallel lines and this is a transversal, and the angle on the same side, अंदर की तरफ सेम साइड पे बने हुए एंगल, एक तो एंगल डी है और एंगल एफ है। दो पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो सेम साइड पे अंदर की तरफ बनने वाले जो एंगल्स हैं इनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, एंड द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। नाउ एंगल डी प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180 degree. Next is angles of triangles. Find angle measures in triangles. हम कैसे angles find कर सकते हैं triangles के अंदर? इसमें exterior angles और interior angles पे हम relations बता सकते हैं, triangle sum theorem बता सकते हैं, exterior angle theorem को हम explain कर सकते हैं. Measures of angles of a triangle. The word triangle means three angles. Now see here in this triangle, these are three angles 1, 2 and 3. Three angles when the sides of a triangle are extended. अगर हम इसकी sides को extend करते हैं तो vertex के exterior side पे जो angle formed होगा it is called exterior angle. The original three angles of the triangles are interior angles. जो अंदर की तरफ angles बन रहे it is called interior angles. And the angles that are adjacent to interior angles are the exterior angles. इस दो sides को जब हम आगे extend कर रहे हैं तो इस adjacent sides पर जो angles formed हो रहा है exterior part पे it is called an exterior angle. Triangle interior and exterior, this yellow part shows the interior angle of the triangle and this exterior part, this heart shape is show the exterior angle of the triangle. Triangle interior and exterior angles, these are interior angle of the triangles and these are exterior angles of the triangle. The triangle angle theorem gives the relation among the interior angle measures any triangle. किसी triangles के हम interior angles को define या find कर सकते हैं. This is the basically if you are tear of two corners of a triangle and place them next to the third corner, the three angles seem to form a straight line. Three angles जो formed होंगे वो एक straight line पे होंगे. You can also show this drawing. Now triangle sum theorem. Draw triangle and extend one side of a triangle. हमने एक triangle draw किया और इसकी इस side को extend कर दिया. Draw a line parallel to extended side as shown. Suppose yes, we have to verify the angle sum property of the triangle. Now in triangle ABC, we can see the sum of angle 1 plus angle 4 plus angle 5 equals to 180 degree because these are straight angle. Now the relation between angle 4 and angle 2, these are two parallel lines and this angle smacks on the shape of Z, then we can say angle 2 is equals to angle 4
and angle 5 is equals to angle 3. Now the relation is these are alternate interior angle. We can say these are alternate interior angle और हम अगर इसको equation 1 में substitute कर दें from equation 1. Now angle 1 plus angle 4 equals to angle 2 plus angle 2 and angle 5 equals to angle 3 equals to 180 degree. Then we can say the sum of the interior angle of the triangle is 180 degree. किसी triangle के interior angles का जो sum होता है is 180 degree. Next, I already explained the sum of angle x, y and z is 180 degree. Now the relation between these angles 43 plus 58 plus 79 is 180 degree. Angle r plus t plus s equals to 180 degree. Now in this figure 85 and 43 are the two angles of the triangle. Find angle C. By angle sum property 128 is the sum of 43 plus 85 plus angle C equals to 180, then angle C equals to 52 degree. Now same example on the base of angle sum property. You practice this all the questions based on angle sum property. Now next, exterior angle property. Yes, an exterior angle is formed by one side of a triangle and the extension of another side. These angles are the interior angle of the triangle and this angle 1 is the exterior angle of the triangle. Then the exterior angle property is exterior angle is equal to the sum of two interior angle on the opposite sides of the triangle. एंगल 1 जो है वो अपोजिट साइड पे बने एंगल 2 plus 3 का सम है. नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंगल. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटीरियर एंगल. दिस इज two angles are interior angle of the triangle and this is exterior angle. Then angle 1 equals to 58 plus 72 is 130 degree. Now same base the example of exterior angle. Now you have practiced more of this chapter 6. Thank you.